psychological we should know why Prout is required. So I have chosen a प्रभात संगीत. आज मैंने एक ऐसा प्रभात संगीत चुना है जो कि आधारित है प्रौत से, मुझे ऐसा लगता है. इस नंबर इज 1090. मानुष सबाई आपन, मानुष सबाई आपन, एक ही मोर में गाथा सब रोहिया, सब कर एक ही आयोजन. मानुष सबाई आपन, मानुष सबाई आपन. दुखे कांदी मोरा सुखे हसी, दुखे कांदी मोरा सुखे हसी. प्रियजन प्रिय मुख भालोबासी, प्रियजन प्रिय मुख भालोबासी. खुदार जल मिले मिसे खाए मोरा, खुदार जल मिले मिसे खाए. बुझी सब करता प्रयोजन, बुझी सब करता प्रयोजन. मानुष सबाई आपन, सबाई ভালোবাসি এই ধরনী, সবাই ভালোবাসি এই ধরনী. আকাশের চাঁদ তারা অরণ্যনী, একই ছন্দে নাচি মোরা, একই তানে গাই, একই ছন্দে নাচি মোরা, একই তানে গাই. ডাকি পরম পুরুষের হয় এক মন, ডাকি পরম পুরুষের হয় এক মন. মানুষ সবাই আপন, মানুষ সবাই আপন. एक ही मोर में गाथा सब रोहिया, एक ही मोर में गाथा सब रोहिया. सब कर एक ही आयोजन, सब कर एक ही आयोजन. मानुष सबाई आपन. Namaskar. I would like to tell the meaning of it. It says that every human being is a family. पूरा मानव समाज एक परिवार है. But one soul, all hearts are wretched. और एक माला की तरह हर हृदय एक धागे में गुथे हुए हैं. Everyone is of the same community. सब एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. Every human being is a family. In grief, दुख में सभी रोते हैं, खुशी में सभी हंसते हैं. सभी अपने नियर एंड डियर को प्यार करते हैं, अपने वेल विशर्स को प्यार करते हैं. In hunger we take food. सभी इस धरा पर जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और ये कलेक्टिव करना चाहते हैं. That we acknowledge as a common need. ये सबकी कॉमन आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हम लोग पहले सूत्रों में देख चुके हैं. So we all love this earth. सभी इस धरा को प्यार करते हैं. Skies, moon, stars and the forests. Everybody loves it.
To the same beat we dance. उसी रिदम में हम डांस करते हैं mentally. To the same tune we sing. एक ही ट्यून में गाते हैं. With one and the same mind, we appeal to the Supreme. That's the meaning of it. Thank you very much, Didi. Take further. Thanks, Dada. Would you also like to do Kirtan for a minute, Dada? Sure, Didi. Baba नाम केवलम बाबा 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 नाम केवलम. Thank you. Thank you so much, Dada. And नमस्कार आप सभी को. सभी का GPIF के प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत है. जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली बार से दादा के साथ जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउट जो 16 प्रिंसिपल्स है उन पे चर्चा हो रही है. और 8th प्रिंसिपल ऑनवर्ड्स दादा ने लास्ट टाइम से स्टार्ट किया है डिस्कशन, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इन श्लोकों को समझाया है. पहला था जो 8वां नंबर का श्लोक है, उन्होंने कल लास्ट क्लास में समझाया था, वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति. इसे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो बाबा ने प्राउत में अपने प्रवचनों में बताया है उसके अनुसार भी समझाया. साथ ही साथ जो करंट सिनेरियो है वर्ल्ड इंडिया का स्पेसिफिकली, उससे रिलेट करके भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था. इसके बाद उन्होंने समझाया था युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम. तो इससे भी बहुत ही सही तरीके से दादा ने समझाया था, और उन्होंने प्राउड की जो बुक है उसको बेसिस लेते हुए अब तक समझाया है, और उसमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू अपना डाला है दादा ने. तो आई होप यू आर ऑल एंजॉयिंग इट. और ज्यादा हम समय न लेते हुए दादा से फिर निवेदन करते हैं कि आगे की जो श्लोक है, आगे की क्लास उसे कंटिन्यू करें. सो दादा, यू आर वेलकम. Thank you. Thank you, Didi. Would you like to make me co-host so that I can share my slides? Yeah, Dada, you are co-host already. Okay, let me check then. Fine, thank you. Please wait for a moment. Yes. Meanwhile, I hope कि सभी लोग ध्यान से सुने, और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो वो नोट कर लें, और एट द एंड ऑफ सेशन आप नोट करने के बाद उसे पूछ सकते हैं. कुछ भी डाउट है या कुछ डिस्कशन है या अपनी तरह से कुछ बातें आप कहना चाहते हैं. ओके, सो दादा, द स्लाइड इज विजिबल. Thank you so much, Didi. Thank you so much. So, okay, so yesterday, last time, not yesterday, as Didi explained, we had gone through two slokas, that is 8th, Vachitrim Prakrit Dharma Samanam Na Bhavishyati, that identicality is not the nature. Yugasya Sarva Nimna Prayojanam Sarvesam Videyam, and that we discussed that through constitution, we want that basic needs are to meet at least the 5 fundamental requirements, and that is through providing purchasing capacity. We don't want dole outs, daan dekar nahi. That is the main thing. और
आज जो हम लोग कोशिश करेंगे to go to the atiriktam pradartavyam gunanupatena. So we say that after getting the fundamental minimum requirements, whatever is the surplus, that has to be atiriktam pradartavyam. उसको जो है उनके गुण के अनुपात में हम लोग बांटते हैं. So let us go through this sloka first. Atiriktam means surplus. Pradartavyam should be given gunanupatena according to merits. So the surplus wealth should be distributed among meritorious people according to the degree of their merit and effort they put in. That is according to their participation, according to their time spent in it. So these are very beautiful things to understand. And after meeting the minimum requirements, as I told you, of all in any particular age, the surplus wealth will have to be distributed among meritorious people according to the degree of their merit, as I explained, of that age. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक स्लोगन है कम्युनिज्म का, that serve according to your capacity and earn according to your necessity. Sounds pleasing to ears, but will yield no result in the hard soil of the earth. हर व्यक्ति जो गुणी है, हर व्यक्ति जो उद्यमशील है, वो अवश्य चाहेगा कि उसको उसके काम के अनुपात में, उसके स्किल के अनुपात में उसको कुछ एक्स्ट्रा मिले. This is the human psychology. That is why Prout is quite scientific and quite मनोवैज्ञानिक. तो अतिरिक्तम जो है वो स्टिमुलस के रूप में, you understand the psychology of a people, even the working men, women, anybody can understand this. As an stimulus it works के रूप में देने से यह समाज को जीवंत रखता है. There is a life in your working. You will try your best to give forward. You try your best foot to put forward. So we neglect Samyavad by all are equal. We neglect capitalism, irrational distribution. कोई खाते खाते, जैसा कि मैंने बोला, और कोई खाने बिना मर रहा है, क्योंकि हम इस बात में विश्वास करते हैं, जो सच्चाई है, कि चाहे वो विलासिता हो या विपन्नता हो, दोनों ही समाज के दुश्मन हैं. ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है. और विवेक संगत, युक्ति संगत आवंटन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वह ह्यूमैनिटी को बताता है, वह मानवता को बताता है. एंड दैट इज व्हाट Prout बिलीव्स इन. सो वी टॉक ऑलवेज दैट विचार समर्थितं बंटनश्च, ये सब बाद में आएगा. सो द रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है वो हम करते हैं. So once minimum requirement and then surplus is distributed according to the work by respecting everyone, but किनकी समाज को अधिक लाभ हो रहा है, जो स्किल्ड लोग हैं उनसे क्या होता है? If we give them a better package, relatively better, if we give them better amenities, they will serve the society better. That is again the सोशल बेनिफिट. समाज को अधिक लाभ होगा उनसे, वो समाज को अधिक सेवा दे पाएंगे. दे विल मेक अदर्स लाइफ सिंपल. सो मेरिटोरियस अपनी कंट्रीब्यूशन के अनुसार अनुपात में एक्स्ट्रा पाएंगे. दिस इज स्टिमुलस, एज आई टोल्ड, टू वर्क मोर, सर्व मोर, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज. When we'll go later, we'll find that with time, the wages gap will reduce. With time, not immediately. But amenities has to be given to the skilled persons, the deserving persons, so that they can serve better. तो यहाँ तर्क यह है कि उनका भी सम्मान होना चाहिए, जो आज भी होता है. आज भी यदि हम नौकरी में जाते हैं तो जो अलग अलग ओहदे के लोग हैं उनकी सैलरीज में डिफरेंसेस हैं, बट यह साम्यवाद में नहीं था. एक उदाहरण देना चाहता हूं. आप सब लोग जानते हैं द जर्मनी वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी. एंड बिकॉज नो रेस्पेक्ट फॉर meritorious were there in East Germany,
then you found that they were literally, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंगाल की स्थिति थी. And you know very well that West Germany, how developed it was. So these are the basic fundamental rules which on the long run makes difference. तो पर्क्स जो है, एमिनिटीज जो है, एक्स्ट्रा जो स्टिमुलाई है, वो उद्यमशीलता को बढ़ाता है, मनुष्य के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, ऐसा स्टडी कहता है, ऐसा अध्ययन कहता है. अतः गुणी लोगों को उनकी प्रतिभा एवं सेवा के आधार पर अधिकतम मिलना चाहिए. दिस इज द लॉजिक, दिस इज द रैशनैलिटी. ऐसा नहीं होने से, जैसे टुडे कम्युनिज्म डाइड इट्स प्रीमेच्योर डेथ because of these fundamental mistakes. And today capitalism, Punjivad, we know that why 1% people have maximum wealth. It is designed like that. So I'd like to go to the another slide. So let us recap the previous one. When we say that there should be 100% employment for the local people. This is again a beauty of Prout. Prout doesn't talk that somebody will go from here to America for their livelihood. No, everybody should be employed local, and that is what Prout believes in to the extent possible. So the basic right of all people is to be guaranteed the minimum essentials for their existence, including at least proper food, clothing, housing, education, and medical care. So this basic right should be arranged through 100% guaranteed employment, not through welfare or dole-outs, which is happening in packets today. Unemployment is a critical economic problem in the world today, and 100% employment of the local people is the only way to solve this problem. There is no other way. Let us go very simple. That need not be make it complicated. और ये इनका क्या बोलते हैं, नेल्सन मंडेला का एक लाइन है कि if you at all want गरीबी को खत्म करना, which is prevailing across the world, whether it's a developed country or it's a developing country, everywhere this problem is aggravating every day. So कहते हैं नेल्सन मंडेला कि गरीबी न्याय से खत्म होती है, दान देने से खत्म नहीं होती है. And that is the fact. This is the psychology. Even our APJ Abdul Kalam says, you might have heard, कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, जो हम कहते हैं ना कि महिलाओं का आदर नहीं है, डाउन ट्रोडन का आदर नहीं है, the very fundamental need is make them economically independent. That is the bottom line. Abdul Kalam says that self-respect comes from economically self-independent. So that's the beauty. And the same thing he is saying that गरीबी न्याय से खत्म होती है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या बोलते हैं रैशनल जो न्याय है उससे खत्म होती है, दान देने से खत्म नहीं होती है. तो ये बात को हमको याद रखना है. एंड मैं आगे चलता हूं. एंड सी वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर हियर कि सी आई एम नॉट द वेरी मच नॉलेजेबल पर्सन अबाउट Prout. What I have done is, I have made some notes. You can also go through, I will request in between, everyone who is interested in understanding Prout, books are there. Prout Nutshell 1 to 21 is there, Idea and Ideology is there, Human Society is there, part 1, 2. There is, I recommended that a small booklet which Baba has dedicated for Subhash Chandra Bose, that is Problem of the Day. So these are the books, they will give you, of course, input. And that is the original treasure of Baba. But what we have gone, there are more than 150 audios and videos, 3 years work of no other than our respected Dada Bimalanandji. We have rather together had opened a site called varavaya.com. Many of you must be knowing, must have gone through. And there is again a simple app, Prout app, Prout. If you can download on any Android, anytime if you are free, you can click it, you can listen it, make your opinion how to talk in public. This is all I have made note, and I'm speaking from there. So let us go further. So we say that minimum requirements must be guaranteed to all by way of purchasing capacity. But those
who are skilled people should have an extra according to their merits and their participation. One more thing, social value, this becomes very close to what system at present it is. That जो आम जो हम किसी को भी वर्कर कहना पसंद नहीं करते हैं प्रोत में, बिकॉज वर्कर करके कुछ है ही नहीं प्रोत में, हर व्यक्ति मालिक है, बिकॉज ऑल आर द शेयर होल्डर्स. तो आज जो वर्किंग कंडीशन है उसमें जो वेजेस डिफरेंसेस ऑलरेडी हैं. फॉर एग्जांपल, टीचर्स हैव देयर ओन वेजेस, मैनुअल वर्कर हैव देयर ओन वेजेस, judges, doctors, engineers have their own wages, which is not minimum but according to their skill, though it's not equal. So there are calculations in society even today. So skill they are employed in the and perform according to requirements of that post, that power, that position. So already atiktam padathabhyam gunanupatena existing somewhere in society. But the fact is, where we are different, we say that 100% people should be employed, not few percent. And here there should be no confusion, that 100% employment. आज सबसे बड़ा खतरा क्या है कि किसी को बोल दीजिए कि प्रौत विश्वास करता है 100% एम्प्लॉयमेंट में, तो लोग ये मान लेते हैं कि हम गांव से बाहर शहर में आकर के हमको नौकरी मिलेगी और हम क्लैरिकल और व्हाइट कलर जॉब में रहेंगे. नो, वी आर टॉकिंग ऑफ सबको इन्वॉल्व करने की बात हम कर रहे हैं. सो संतुलित अर्थव्यवस्था में प्रौत के अनुसार क्या है, मेनी ऑफ यू नोइंग कि 30 से 40% पीपल विल वर्क इन एग्रीकल्चर. दिस इज बैलेंस्ड इकोनॉमी. 20% in agrico industry, that is the industries which help the agriculture, and then 20% in agro industries, that the final product where we make from the agricultural products. And then 10% will be the white collar job, which is even today 6-7% white collar jobs are there. And non-agriculture industries like steel, cement, etc., there will be 10%, and 10% in commercial sectors. So this should be very clear that when we say 100% employment, that is the meaning of it. So, and at the same time, we have a different set of economy where we are talking that fundamental requirements has to be guaranteed, that we deal with people's economy. We have a 4-tier economy. That is, जो हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम 4-tier इकोनॉमी की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर हैज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, देयर हैज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री, एवरीथिंग. इकोनॉमी पार्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड पॉलिटिकल पार्ट इज सेंट्रलाइज्ड. दिस फंडामेंटल आई टॉक लास्ट टाइम. तो जो लोक अर्थनीति है, जो पीपल्स इकोनॉमी है, वो डील करती है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, द अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल फॉर द सर्वाइवल. फिर इसके बाद आती है कॉमर्शियल इकोनॉमी, सामान्य जनरल इकोनॉमी, फिर मानस अर्थनीति, साइको इकोनॉमी. तो मैं यहाँ यही बताना चाह रहा था कि 100% एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इन दिस कैटेगरी. People should not get confused. That is why I mentioned that. Okay. So that is why we say here that after the basic minimum requirements, atiriktam pradathabhyam gunanupatena. Then, so no one will getting less than minimum, but on top of that, every skilled person will have added extra salary, wages per hour. In Prout, priority will be given based on utility and utilization. See here again a beautiful point. I mean, this is such a small sutra, but Baba has very big meaning in this. Even, I mean, a book can be written on one sutras. So what we do is, in Prout, priority will be given based on utility of course, which is even today, and utilization, that is the objective value, where a person is helping in producing the wealth. We want that 100% people should be involved in generating wealth in society. That is the purpose. See, when we are saying that we will be giving 100% people employment, it means it is not just for their survival. It is for creating a wealthy nation, healthy samaj, wealthy society. When so much people will be working in wealth generation, obviously
you will be a very, very rich country. So I was saying that, so helping to producing the wealth is helping you running the society, maybe in service area or the wealth creation area, because there are two areas of employment. One is a service area, सेवा मूलक कार्य जो है जितने भी हैं, whether it's called a teacher, even the doctors, even the what do you call judges, political जो हमारा what do you call MP, MLAs. So there are the service sectors. So we have a two kind. One is a money creating, another is administrative or the service sector. So there are two kind of values at the same time, the useful value and existential value. This is also a specialty of Prout only, because Prout believes in existential value also, which is missing today. Two type of value in every individual. The other area is subjective area and one is objective area. So existential area, like mother, take an example, like mother is taking care of her children, which usually happens now. बड़ा nervous होकर के एक माँ कहती है किसी से पूछो क्या करती हैं, बोलेगी I am housewife. The tone is such that I am not earning, so my value is not there. But the love of mother, she is investing all her time in the child. Has it got no value? Rather, it has very high value and is subjective. Mother love for children shape its confidence and healthy growth of the personality of a citizen for tomorrow. This is fun. How a nation can be a very strong nation? Unless every individual, every citizen, every child, personality growth is in a balanced way. What the major responsibility goes to mother in the very beginning, at least up to the age of 5 years. So the utility value and existential value, that is objective and subjective values, must be respected. And this facility is there in Prout. Out of context, I can tell that even if a mother, a boy and a girl working in the same industry, same position, but if mother is having a baby, she will give an extra, because not only she is performing at par with the men, part of her mind is there with the child itself. So in fact, she is working extra than what we say is giving the value, utility value. So that will be respected in Prout. Then atriktam pradarthavyam gunanupatam. These are the fundamental differences. Like teacher will have a different value. One more thing I would like to say here. Mother will have a different value. Even retired people. Same is the condition that when retired people, because the society has got so many high-skilled people, so many, they will guide and advise the new generation. Under their guidance, counseling, the working ability will improve and old wisdom available to the new generation. So elder people may not have enough physical strength to work with the new generation at different performance. So consulting values, advisories, services. Therefore, wise people in society will be highly honored in Prout system, which is missing today. Like a teacher in her or his lifespan, the mind, the mind, the personality and the thinking, the character, such people are highly placed in society. The teacher who have taught those children. So they keep running judiciary, they keep running health sector, education sector, science, technology sector. So researchers, everything. So they keep doing. But when this man retires, when that very professor, that very teacher, that very skilled person retires, or the lady retires, then they are thrown like a junk.
This is capitalism today. So that is inhuman. To consider only their utility value and not the existential value is a inhuman approach. And even now, they have utility because their students are doing wonders in science, research, technology. They are going to space stations, doing atomic research. How you can equate that 10 hours per day and that salary with, at the end, have no commercial or connection, contribution now. And after retirement, you will say that there is no contribution. Just you will throw them like this. So even those students, आज भी ऐसा होता है, जो पुराने जो students हैं, जो अपने teachers को बहुत प्यार करते हैं. So even those students honor and venerate their teachers who shaped their life. The students still have the bonding for their teachers, but the system doesn't recognize them. That is unofficial, that we love our teachers, we meet them, we greet them, so we count them. That is, so the mechanical approach which is today is a very mechanical, unpsychological, not good for social growth. So the social cohesion, it disintegrates the society. That is what is happening, and everyone feeling alone after retirement. This is again a psychology. You search, interview the old people. They feel loneliness after retirement. Everyone becomes individual. And individually exists not bound with a bond of collectivity. Individual existence is not bound with a bond of collectivity today. So the social bonding, they all free, feel lonely, alone, to struggle, which is bad. We all agree. So ये जो है, ये आजकल आप देख रहे होंगे वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है. So these are the few psychological facts of life. So all need to be loved, in all phases of life. It is not that till his utility was there, we love them, and once they are retired, we don't love them. That should not happen. So, atiriktam pradarthavyam gunanupaten again. So the surplus wealth should be distributed among meritorious people according to degree of their merit. Talking of two kind of values, utility values and existential values. Existential value is very high if you look at it psychologically. Why? And very old person having no utility value in your eyes still breathes. फिर भी वो सांस लेता है, फिर भी वो जिंदा है. ऐसा क्यों है? Because why nature is not taking away the breath of that person? There is some cosmic purpose behind it. And presence of this person is helping the society. Today, we may not understand, but some cosmic purpose is there, which is mystery today for material world. Therefore, society will always honor the person who will have lost its utility value, but if they are still available physically, society will maintain their life in good respect and good condition, and that is the sloka talks about. It is not that one line. It has very big meaning in it. That is why Prout is unparalleled philosophy, which includes all embracing philosophy, human, plants, animals, and even in inanimate world. So we love all means all, and hate none. That is neo-humanistic drishtikon, that is neo-humanistic attitude, and that is what this sloka between the lines exists, many values of society. So here we will be, I hope we have made justice to make you understand. Atiriktam pradarthavyam gunanupatena. And if you go to the next, yes.
So let us read what our text says. It will take 1 minute. So अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन, इसका भावार्थ है Excuse me, Dada. sorry Dada, you have exited the full screen mode. If you do that, it will be more. Okay, fine, sure, yeah. So अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन, that is युग की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो अतिरिक्त संपदा बची रहेगी उसे विशेष गुण संपन्न व्यक्तियों के बीच गुण के अनुपात में उनमें बांट देना होगा। जिस युग में एक साधारण मनुष्य की आवश्यकता, ऐसा लिखा हुआ उसमें एक साइकिल है, एक पुराना स्टेटमेंट है, उस युग में एक चिकित्सक की आवश्यकता एक मोटरसाइकिल हो सकती है। गुण के आदर के लिए तथा गुणी को समाज सेवा का अधिकतर सुअवसर देने के लिए उसे मोटर गाड़ी देनी चाहिए। दिस इज क्वाइट लॉजिकल। सो यह बात, the surplus wealth should be distributed among meritorious people according to their degree of their merit, is very important. And I think okay, almost 40 minutes is done. So let us switch over to the next. That is, this we have discussed, and we should be very clear that we are Proutist and we are not this. बहुत लोग कहते हैं कि Prout तो साम्यवाद है, ये साम्यवाद नहीं है। That is why we need to understand, to tell the society that this is neither communism nor capitalism, is a Proutist philosophy, a progressive utilization theory. This is a new world order, we must say that. Now, the 11th sloka, that is 5.11, talks about सर्व निम्नमान वर्धनम समाज जीव लक्षणम। ये कैसे जानेंगे कि आज का जो समाज है वो जीवित समाज है कि मृत समाज है? आप ही देख सकते हैं। आप या समाज में जब निगाहें दौड़ाएंगे चारों तरफ तो आप देखेंगे कि कुछ अपने दोस्त हैं, कुछ मित्र हैं, उन्हीं में दुनिया चल रही है, समाज करके कुछ नहीं है। हाँ, दल हैं, तमाम दल हैं यहाँ पर, बट समाज नहीं है। तो इसका भावार्थ है साधारण मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता जो स्थिरीकृत मान, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, गुणियों को उससे कुछ अधिक अवश्य ही मिलेगा, किंतु इस निम्नतम मान को ऊपर उठाने का भी अंतहीन चेष्टा करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज फिक्स कर दिया है कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये है तो उसको जिंदगी भर वही मिलेगा। नो, दिस इज द सिंबल ऑफ अ डेड सोसाइटी। सो द वाइब्रेंट सोसाइटी इज कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है, जनसाधारण की आवश्यकता यदि एक साइकिल की होगी तो गुणियों की मोटरसाइकिल की होगी, जैसा हम लोग बात कर चुके हैं। तो हम हमेशा चेष्टा करनी होगी हमें, देखिए जनसाधारण को भी एक मोटर गाड़ी मिले। प्रत्येक व्यक्ति को एक मोटर गाड़ी देने के बाद संभव है कि देखा जाए कि गुणी जनों के लिए एक वायुयान की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपनी सेवाएं और अच्छी दे सकते हैं। गुणी, अभी एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी हमारे दिल्ली में या पूरा नॉर्थ में इतना बाढ़ आया हुआ है। If doctors are provided special amenities, that is what is being done there. So you can reach at a far-reaching places and give your service. So ये जो है वक्त के साथ, समय के साथ जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये बढ़ते रहना चाहिए। सो प्रत्येक व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल देने के बाद, जैसा कि मैं बोला, ये संभव है। गुणीजनों को एक वायुयान देने के बाद निम्नतम मान को ऊपर उठाकर बाबा कहते हैं कि जनसाधारण को भी वायुयान देने की चेष्टा करनी होगी। मतलब कंटिन्यूअसली यू हैव टू वर्क फॉर, स्ट्रगल फॉर इम्प्रूविंग द एमिनिटीज and the economic condition of every individual basic minimum requirements। चेष्टा करनी होगी, एवं इसी चेष्टा के ऊपर मनुष्य की जागतिक वृद्धि निर्भर करेगी। बोलते हैं ना, द फिजिकल जो रिद्धि है ना, रिद्धि सिद्धि और समृद्धि जो है, तो जो जागतिक रिद्धि है, जो भौतिक रिद्धि है, वो इसी पर निर्भर करेगी। मैं एक कोटेशन लाया, आप लोग जानते हो कि the richest 1% today, almost half the world wealth, and there are many. So this is कितना awkward सा लगता है सुनने पे। Even rich people want rich people to be
taxed more. एक बड़ा सा मतलब इसके अंदर की बात आपको जाननी होगी. हमारे सुंदर दादा रेड्डी दादा हैं, इज अ वेरी क्वाइट इकोनॉमी फ्रेंडली पर्सन. तो ये करता क्या है, इनको क्या लगता है लोगों को खुश करने के लिए, वो टैक्स डाल दो, टैक्स से पैसे कलेक्ट करो, रेवड़ियां बांट दो, या जिस तरह की सेवाएं देनी है दे दो. दिस इज वेरी इजी फॉर वेल्दी पीपल टू डू इट. एंड इसी में हम पॉलिटिक्स करते चलते हैं, खुद भी लूटते हैं और समाज की भी सेवा करते हैं. So this is not acceptable. उससे समाज की सेवा नहीं हो सकती है. That is what the quotation of Mandela says. Two more statements. The richest 1%, as I have told, while the poorest half. This is another eye opener. While the poorest half of the world own just 0.75%. In fact, they have acquired nearly twice as much wealth in new money as the bottom 99% that we are talking after the pandemic. 81 billionaires. See, अब just count कर लीजिए, केवल 81 लोग हैं. Their billionaires have more wealth than 50% of the world combined. टैक्स चाहे कितना भी लगा दो, तुम उससे समाज का भला नहीं होने. Prout, you know all that believes in tax-free income. So that's not the subject today. तो हम कह रहे थे कि सबको इंपॉर्टेंस देना होगा, एवरी इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देना होगा. एंड अगेन एक बाबा का कोट मैं आज अच्छा लगा, मेरे को लाया हूं, दैट नोबडी इज अनइम्पॉर्टेंट, वेदर इट इज अ रिटायर्ड पर्सन, वेदर इट इज अ जेंडर, एनी जेंडर और एनीवन. बाबा से गॉड हैज द सेम केयर फॉर एन एंट और अ मॉस्किटो एंड अ मैमथ. So there is no special importance to a mammoth because it has a big body. So the amount of care that matlab Paramatma, devotes to an ant is the same which he devotes to the entire cosmos, not less, not more. So the entire universe, consisting of all the realm, is so complex and vast, yet it does not require any more headache to God than a white ant. एक जो दीमक है उसको भी परमात्मा को उतना ही प्यारा है, उतना ही प्यार से बनाते हैं जितना एंटायर कॉस्मोस को बनाते हैं. So behind every created being there is a flow of energy from God. So a mammoth cannot move without his grace. Why I am making this statement is we should know, unless this kind of psychology you have, you cannot be fruitful for establishing Prout. As last time I mentioned that Harar me Pita Gauri Mata Swadesa Bhunatrayam, at least that kind of psychology you have, that Parama Purusha is my father, Parama Prakriti is my mother, and the entire world is our homeland, and everybody is the kith and kin of that Almighty. So we are related in the relation of brothers and sisters. So these psychologies are very important in between. So Baba says, a mammoth cannot move without his grace, and a blade of grass also cannot move without his approval. So nobody is unimportant. Nobody is insignificant. Each and every existence is valuable. So you must not develop the psychology of helplessness, hopelessness, defeatist complex, or fear complex, because the Supreme Father is always with you. So these are the wonderful psychology we need to carry when we talk of the society, the economic system, the Prout. So we were talking that Sarva Nimna Manavardhanam Samaj Jiva Lakshanam. तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है समय के साथ बढ़ते जाना चाहिए, तो उसी समाज को हम कह सकते हैं कि समाज जो है वो जीवित समाज है, अदरवाइज वह मृत समाज है. दिस इज एज पर आवर डेफिनेशन ऑफ प्राउट. तो समाज के इस अवस्था से लगातार आगे बढ़ने का प्रयास ही समाज के जीवंत होने का प्रमाण है. Didi, I think I don't know whether shall I continue or drop. Is 1 hour is over? You decide. You have time. Please continue. You can just finish the part. Thank you, Didi. Thank you so much. Okay. So समाज के इस अवस्था से लगातार बढ़ते रहने का प्रयास ही समाज के जीवंत होने का प्रमाण है. To increase the basic standard of living is the indication
of the vitality of society. तो सर्वनिम्न मानवर्धनम समाज जीव लक्षणम. तो देखिए, हियर बाबा इज कनेक्टिंग समाज एंड इकोनॉमी. समाज आपको पता है 8 सूत्र में खत्म हो गया, बट समाज का जो वाइब्रेंट समाज है भी लगातार अविराम गति से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहेंगे. वही समाज के जीवंत का उदाहरण है, वाइब्रेंट होने का लक्षण है, परिचायक है.